Ji, Assalamu alaikum. My name is Zain Asif Ihsan, and I am a student as well as a dairy farmer. Uh, in 2016, my father brought one or two animals, cross-bred cows, to his farm, and I also loved animals since my childhood. So I used to go to the farm. I used to spend my whole day like seeing them eating the feed and getting milk. So that day I thought that I will manage this dairy farm and I will make it the biggest dairy farm in Pakistan. So inshallah, and we were at like one or two animals, and our production was 20 liters, 25 liters, and now we are alhamdulillah at 1600 liters per day, and with 165 animals, all are Australian and American Friesians, producing 20 liters per day. And now my responsibility is to manage all the affairs of dairy farm, like purchasing, production, breeding, finance, accounts, everything needed to manage a dairy farm. So I learned that genetics and feeding is really important in dairy farm. To run a dairy farm, if you have good genetics, you can take maximum potential from your animals, and they will produce like 40 liters, 45 liters per day. Now we had cross animals, so our average was like 9-10 liters per day, and we weren't getting profits from those animals. When we brought American animals, we imported 25 animals from Australia, 20 animals from America. So they were giving us 40 liters per day. So we were really happy running a dairy farm. Feeding is a key to run a dairy farm. Like whatever a cow eats, it will result in its milk. To manage a supply chain is very important. Every feed should come on time. Problems are increasing. जब मैं लाइक सप्लायर से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि जी रोज़ के रेट जो हैं वो आप आज कोटेशन मंगवाएं और आज ही पेमेंट करें, क्योंकि अब जो है वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है. कल कोई और रेट्स होंगे, परसों कोई और रेट्स होंगे. तो आई गेस business is getting difficult day by day, and पहले जो है वो बिज़नेस करना आसान था. मैं जब आया तो कोई रेट्स जो हैं वो 2-3 दिन बाद भी हम पेमेंट करें तो कोई मसला नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी रेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू डॉलर and imports, but we are trying our best to make my dream possible, to make Ihsan Dairies the biggest dairy farm in Pakistan. जब मैं आया था तो मुझे लगता था कि भाई सिर्फ मिल्किंग होनी है और फीडिंग करवानी है जानवरों को और कुछ नहीं. तो जब मैं और डिटेल में गया फार्म पे कैसे चलाना है, कैसे इसको रन करना है, तो I faced a lot of difficulties, like रोज़ के जो है वो फीडिंग में कभी कोई जानवर बीमार हो रहा है, कुछ ये मशीन में मसला आ रहा है, कोई फीडिंग में मसला आ रहा है, तो काफ़ी मसले थे. लेकिन फिर जब मैं एक जानवरों को देखता हूँ कि वो खा रहे हैं, फीड खा रहे हैं, तो सोचता हूँ कि नहीं यार, मैं इसको बड़ा करूँगा और इंशाल्लाह इसको बिगेस्ट डेयरी फार्म पाकिस्तान बनाऊँगा. और मुझे लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इसमें सेल्स का आई थिंक कोई मसला नहीं है, क्योंकि रोज़ का दूध बिकना है. डिमांड इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू पॉपुलेशन आई गेस. तो इसमें पोटेंशियल है और काफ़ी यंगस्टर्स को भी इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एक मज़े की फील्ड है.
ایک پروفیشن نہیں ہے، یہ ایک شوق ہے، کیونکہ ڈیری فارمنگ وہی کر سکتا ہے جس کو جانوروں کا شوق ہو اور جانوروں سے پسند ہو. کیونکہ میں تو جب آیا تو مجھے شروع سے ہی جانور پسند ہے اور میں اس کی پین بھی لیتا ہوں. آئی ورک ڈے اینڈ نائٹ. ہماری رات کو بھی فیڈ آ رہی ہوتی ہے، دوپہر میں بھی فیڈ آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اٹس 24 آور بزنس. رات کو جانور کو کوئی مسئلہ ہو گیا، دوپہر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو آئی تھنک ینگسٹرس کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. کافی اس میں لرننگ ہو سکتی ہے کہ فارم چلتا کیسے ہے. دودھ جو ہے وہ ہم پیتے ہیں، لیکن وہ دودھ کیسے آتا ہے وہ جو ہے وہ آئی تھنک ینگسٹرس کو سیکھنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ کیسی فیڈ ہم ڈالتے ہیں، اور لوگوں کو سیکھنا چاہیے. اور اس فیلڈ میں یہی کہہ سکتا ہوں بہت پوٹینشیل ہے. تھینک یو.